Assalamu alaikum, dear students. And today, in the previous classes, we have talked about the course contents of your course, that what we will have to we study in the whole semester, and you are also well aware of your units, your chapters, each and everything. So in today's class, we will talk about unit number first, because this is online lecture number first, and here for today's class, the course agenda includes number first, what is academic writing? Number second, what makes it different? Like what makes academic writing different from other types of writing? And the third is definitions by different scholars, like who define academic writing and what way. And number four, why it is important. Number five, who uses it? Who uses academic writing? And number six, examples are there. So after discussing these things, in the very meantime, I will ask you certain questions, and you have to answer all those questions, or you will be able to participate in this online lecture. Uh, and then you have option raise hand when I ask questions. So you will click on that raise hand if anybody want to participate, and then I will unmute you here, so you will be able to answer. So let's start with the very first, what is meant by academic writing? As you know that academic writing is basically a formal and structured way of writing used in educational and professional settings. Means that this is not uh, other type of writing like that we using or you can say text to our friends using WhatsApp or any other activity. But on the other hand, this is basically a formal form of writing, a formal type of writing. It is a proper structure. It is used in educational and professional settings. Like you are here using it in your exam papers as well. You are using your academic writing and writing formal letters. So it is not like everyday writing. Instead, it is more organized. It uses specific vocabulary and is supported by evidence from research. Uh, for if we talk about nursing students, like you are in sixth semester, so for nursing students, this academic writing is basically plays a vital role. It is very much important because it helps them, or it helps you to understand medical knowledge, communicate effectively with others, and apply evidence-based practice and patient care. If you are caring about you are in the hospital, and you have many things to do, so it will help you there, uh, and all those in effective communication, and also patient care and also medical knowledge, etc. Academic writing, on the other hand, is the foundation of learning in colleges and universities. So it is a formal way of writing that students and professionals used to share knowledge. Uh, this is a formal type of writing where students and professionals use this type of writing to express ideas, what's in their minds, and also present research findings if they have. After that, we can say that unlike casual conversations that we are in conversation with one another, unlike conversational writing that you are going to write in WhatsApp, you are write something in Gmail, even though Gmail is one form of academic writing because we use Gmail for formal type of writing. But WhatsApp, Facebook Messenger, or social media accounts, messengers. So, unlike all those things, academic writing basically follows a specific rules and structure. It follows specific order, specific structure. Like we have a proper introduction,
then we will have a proper sentences, proper arguments, examples, and then conclusions. So it is not like daily basis conversation. Now the thing is that what makes it different? It means that what makes academic writing different from other type of writing. Academic writing is basically is different from the other kind of writing we do in everyday life, like texting or writing a diary. Uh, Sakib Hatak, just wait for 2 to 3 minutes. I will unmute you then. So academic writing is different from the other kind of writing we do in everyday life because, like texting or writing a diary, it is different from academic writing. In academic writing, the focus is on being clear, it is being formal and based on facts or research. While it also different from other kind of writing because it follows a specific rules, it follows specific goals, and it focuses on clarity. And after that, it focuses on evidence and also objectivity. So here are the main features that make it different, that make it different from other kind of writing. How many features are there that make academic writing different from other type of writing? So the first one is formal tone. Academic writing uses a formal style and it avoids slang languages. Slang languages means जो ये वो languages है जो कि आम तौर पे जो लोग बोलते हैं आपस में use करते हैं. It's not included in academic text. So contractions है and it avoid contractions or casual languages. Examples are here that in academic writing we use children instead of kids. In academic writing, we use do not instead of don't, like contractions. Yeah. The second uh, feature that make academic writing different from other type of writing is evidence in research. Ideas in academic writing basically is must be supported by evidence. It must be supported by evidence from reliable sources, from accurate sources, such as books, journals, and studies, etc. But writer usually include citations and references as well. If we are focusing, if we are talking about academic writing, so we will be very much clear about that. Academic writer basically uses in-text citations as well. It uses references as well. Why all these things? Because it is formal in nature, it will be clear in nature, and it is different from uh, daily life conversation. Now, the third feature is objective and unbiased. So, academic writing basically focuses on the facts and logical arguments rather than personal opinions or emotions. If we share our personal thoughts or emotions, so it doesn't matter there. The writer presents information in a natural way and supports claims with data or research. So, if we are going to write an academic writing, we must be aware of the natural way. We must be aware of the well research, of the well data, and then we will present that data in our writing. So it will be considered an academic writing. And the fourth one feature, I think this is the last one, is the clear structure. So, uh, academic writing basically follows a structured format, such as there should be an introduction, there should be a proper body paragraph with arguments and evidence. There should be conclusions as well. And also, if we talk about research uh, papers, so it may include sections like methodology, sections, results, or you can say different chapters, like chapter number first is introduction, chapter number second is literature review, third is methodology, fourth is data analysis, and the fifth one is conclusion, recommendation, and findings. And then each chapter include its own contents. So this is what we are talking about, that how academic writing is basically different from all other kind of writing.
Before going to proceed, the definitions by different scholars, if you want to participate, here or say something, or you have any questions, raise your hand so that I will unmute you. Yes, please. If you haven't any questions, so I will proceed. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप रेज हैंड पे क्लिक करें. यस, मोहम्मद उस्मान. यस. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर काइंडली आप ये फॉर्मल टोन और ये ऑब्जेक्टिव ये एंड इसको काइंडली रिपीट कर लें। ये फॉर्मल टोन जो है, यानी कि जिस तरीके से हम ये एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, तो वहां पे हम फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा जो टोन होता है, द वे ऑफ राइटिंग और द वे ऑफ स्पीकिंग, सो वो हमारे पास फॉर्मल होता है. जिस तरह किड्स जो है वो फॉर्मल है, लेकिन एकेडमिकली अगर हम इसको देखें तो इसकी जगह पे हम चिल्ड्रन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर फॉर्मल इन नेचर. और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो भी हम उस यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि अब हम अगर डोंट, कांट, हैवंट इस तरह के वर्ड्स यूज करें तो एकेडमिकली हमें वो परमिशन नहीं है. तो हमें चाहिए कि वो प्रॉपर वो सारे वर्ड यूज करें, डू नॉट, एक खास जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग. इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड जो है, यानी कि इसमें जो है चूंकि ऑब्जेक्टिविटी है. I don't know what happened. The link is down or. Okay, we will proceed to the next slide. Now, definitions by different scholars. नेट का तो इशू नहीं है यहाँ पे. पता नहीं क्यों ये जूम ऐप जो है वो अचानक से डाउन हो गया एंड देन अगेन ओपन हो गया, तो कुछ पता नहीं चला व्हाट हैपेंड. But let's continue with the next slide. This here is the definitions by different scholars. Uh, Now, for example, according to Belle 2011, he explained that academic writing is basically a clear, structured, evidence-based form of writing that avoids personal opinions or emotional languages. This means academic writing focuses on the facts and also uses a logical. Who is Sahib Zada? Yes, yes, okay. Uh, सो एकेडमिक राइटिंग को अगर हम डिफरेंट स्कॉलर्स के साथ कंपेयर करें, यानी कि वहां पे इसको डिफाइन करें कि वो इसके बारे में क्या लिखते हैं, तो एक हमारे पास है बिले 2011. अकॉर्डिंग टू hem, academic writing must be clear, must be structured, it will be evidence based form of writing, and there shouldn't be any personal opinions, or you can say emotional language, because we will not have use such type of language in academic writing. So this means that academic writing basically focuses on facts and uses a logical flow to express ideas. And another scholar, Highland 29, according to Highland,
he states that academic writing uses discipline-specific language. Discipline-specific language means if you are writing something, uh, if you are pharmacist and writing about medicines, so you will use medical language there. And if correct grammar as well and logical structure, तो discipline specific का मकसद यही है कि हम जिस discipline में है उसके according हम language को use करेंगे. For example, in nursing, student must use proper medical terms and avoids informal expressions. Now, why academic writing is important? Academic writing basically helps students to organize their thoughts, show understanding of complex topics, communicate professionally, and use reliable sources to support their ideas. तो यहाँ पे जितनी भी है means के it helps students to organize their thoughts, to help students to think about each and everything, to think about the topic they are going to discuss, to understand or show understanding of complex topics if there is complexity in topics. So academic writing basically helps you how to write those complex concepts, how to write those complex topics into simple one, and then communicate professionally, and you will be able to communicate in a professional way. If you are talking with your HOD, if you're writing an application to your HOD, to your teacher, or you can say in professional setting, so academic writing will help you how to write proper professional application, and then use a reliable source to support their ideas. Academic writing also helps us to use reliable sources, not going to just copy paste from the chat GPT, or you can say from other uh, type of sources, but we have to use it and accordingly. Like it will be reliable. The data that we are taken must be from the research, or some sources that are reliable, that are accurate in nature. Now, in the field of nursing, this becomes very important, this academic writing, because nurses must write patient reports clearly and accurately. They need to understand and apply medical research in real life situations. And also, academic writing prepares them for future roles in education, research, or leadership. Now, the thing is that who uses academic writing? Academic writing is used by the first thing that we have to talk about as academic writing. Basically, we uses academic writing. You all uses academic writing. Means teachers, students, those who are in professional environment. So they need to use academic writing for the proper uh, conveying of information. Now here, if we look at the slide, so students to write essays, assignments, and research papers, they use academic writing. Teachers and lecturers to create academic materials and assess students. Then we have researchers to share findings with others. And after that, professionals, including nurses, to write case studies, reports, and documentations. So all of them जो है ये सारे जो है वो academic writing को use करते हैं. And if we talk about examples, so instead of saying, for example, if there is a formal, informal sentence, I think this patient is doing better now. So you haven't any proof that I think, first of all, I think isn't any proof because this is your own personal opinion. So I think this patient is better now, and this patient is better now. You haven't any argument that up to which level this patient is better now. Either he's recovered 80%, either he's recovered 60%, 20%. So we are not sure about it. A more academic and professional way would be like the patient's vital signs have stabilized, means if he was facing some problems, and you can say
heart attacks or even brain problems, headaches, anything. So we will say the patient's vital signs have stabilized, first thing, and there is an observable improvement in mobility. Means that you have improved, you have checked the improvement that whether he is able to move on or not. And indicating progress and recovery. सो इसी तरह के जो है वो हम अल्फाज देखेंगे यस नवीद Naveed Khan has raised their hand. Now, this version is basically formal and objective language and based on observations and evidence. So, this was about academic writing, uh, what is meant by academic writing, who uses it, why it is important, what are some of the examples. Now, are you may be able to participate. Yes, students. Add something. Ejazuddin, yes, say something. Tayyib Umar. अस्सलाम वालेकुम सर Walaikum assalam. Yes, Tayyib. ट्रांसलेट करे तो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही Yes, please say it again. सर उर्दू में भी ट्रांसलेट करे सर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही सर इंग्लिश में ज़्यादा ये प्रॉब्लम तो सारे स्टूडेंट्स कल से कह रहे हैं लेकिन ये है कि अब recorded form में भी है and then it will be uploaded, so I think we have to be able to talk in English. ओके सर जी Yes, जो भी आपको समझ आया है वो आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ अभी. Yes, Umar. Salmanullah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सलमान. सर क्या हम ऐसे राइटिंग कर सकते हैं ऐसे या कुछ चीज जिसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज करें एक पैराग्राफ में और दूसरे में अनफॉर्मल यूज करें? यस बिल्कुल हम कर सकते हैं लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखते हैं तो यू विल बी एबल टू लाइक यूज प्रॉपर लैंग्वेज. आपका जो प्रॉपर लैंग्वेज होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट होगा फॉर्मल होगा. लेकिन अगर आप जनरल इसी तरह की राइटिंग करते हैं तो उसमें आप किसी भी चीज को इंक्लूड कर सकते हैं. यू आर नॉट बाउंड. For example, so for example, I write something to my friend. Can I use both languages? And first, for example, I use informal. Then, in the second paragraph, I use the formal. Yes, yes. If you are writing to your friend, so you can use the whole paragraph informal as well, because it is not included in academic. Like we cannot include it as academic writing because with friend conversation with friend is informal in nature, probably. But you can include both of them as well, like formally, informally. बट हमने जिस तरह कहा कि इट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक वोकैबुलरी और डिसिप्लिन स्पेसिफिक लैंग्वेज. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिसिप्लिन में है और उसके अकॉर्डिंग आप फिर जो है वो राइटिंग करेंगे. Okay, thank you, sir. Yes, anybody else?
सर ये फरहाद अफरीदी कह रहे हैं कि मेरा माइक ऑन करें। फरहाद हैंड रेस करे। वेयर इज फरहाद? वो 51 स्टूडेंट है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फरहाद कहाँ पे है। 10 मिनट्स में मीटिंग फिनिश्ड होगी। 10 मिनट्स का टाइम दिया है तो। यस, लताफत आरा, से समथिंग। लताफत आरा, आर यू देयर? Yes, sir, but I don't have something to say. शेयर करें कुछ भी स्टूडेंट के साथ रिगार्डिंग एकेडमिक। यस, फरहाद को भी ओपन कर रहा हूँ। फरहाद, अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये जो हम अक्सर ये आइलेट्स वगैरह के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास एकेडमिक में आते हैं या फार्मल वगैरह में आते हैं, इसके बारे में ज़रा बता दें। ये एकेडमिक में अगर हम इसको डिसिप्लिन ही देखें कि डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल आइलेट्स है, टिफल है, टिसोल है, और आप बाकायदा एकेडमी जाते हैं वहाँ पे वो आप चीज़ों को देखते हैं, तो ये एकेडमिक में आते हैं फिर हमारे साथ। और क्योंकि आइलेट्स के फिर टेस्ट होंगे तो टेस्ट भी जो है वो आप इस तरह की नहीं कह सकते कि आप उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। लेकिन फिर राइटिंग के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती है, तो उनको फिर लाइक ब्रॉडली अगर हम देखें तो एकेडमिक राइटिंग है, लेकिन उसमें अगर हम फिर डीप डिटेल में जाए तो उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो फिर हम देखेंगे कौन से टाइप के अकॉर्डिंग है। और सर दूसरी बात ये कि जो हम रिसर्च करते हैं या कोई ऐसी पब्लिकेशन करते हैं, तो यस, ये भी हमारे पास एकेडमिक राइटिंग में आते ये हैं। प्योरली एकेडमिक है, इसमें फिर हम टाइप्स को नहीं देखते। जो रिसर्च हो गया, जो जर्नल्स हो गए, जो पब्लिकेशंस हो गई, इट्स प्योरली एकेडमिक राइटिंग। क्योंकि इसका एक खास फॉर्मेट होता है, रिसर्च का हम फॉर्मेट के को फॉलो करके रिसर्च लिखते हैं। जिस तरह मेथोडोलॉजी सेक्शन होता है उसका अपना लिटरेचर रिव्यू होता है, तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या को हम फॉलो करते हैं। और सर दूसरी बात ये है कि एकेडमिक राइटिंग के जो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, परसुएसिव और क्रिटिकल है, तो इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसके हमारे पास क्या फ़ायदे हैं सर? किस चीज के, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर हमारे पास जो एकेडमिक राइटिंग के 4 टाइप्स है, हम्म। जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आता है, एनालिटिकल आता है, परसुएसिव आता है और क्रिटिकल आता है सर। सही। ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं सर? ये हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें तो उसको जो है हम जब नॉवेल्स लिखते हैं, हम स्टोरी लिखते हैं, हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, विजुअल्स जिस इसी तरह डिस्क्राइब हो कि जो रीडर्स है उनके दिमाग में उसका जो है विजुअल्स बने, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ राइटिंग इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं परसुएसिव लैंग्वेज की या टाइप की, तो वो जो स्पीचेस है, पॉलिटिकल स्पीचेस है या पॉलिटिशियन है, या आप किसी को जो है कन्विंस करना चाहते हैं, आप किसी को कायल करना चाहते हैं, सो यू हैव टू राइट परसुएसिव राइटिंग। और इसी तरह और क्या आपने जिक्र किया? इसके अलावा कौन सा टाइप की बात की आपने? सर आपकी नेट का इशू है सर, वो जाता है बार बार। नहीं, यहाँ पे तो इशू है नहीं, नेट तो सही फास्ट चल रहा है। सर आखिरी बात ये कि ये जो जो हमारे पास एकेडमिक राइटिंग है, इसकी रूल रेगुलेशन दूसरी राइटिंग की तरह सेम है या इसमें कोई चेंजेस वगैरह है सर? इसमें चेंजेस है क्योंकि दूसरी राइटिंग को हम इनफॉर्मल राइटिंग कहेंगे। सही है। तो उसका जो जी है सर। इनफॉर्मल का कोई हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता।
वो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एंड उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक राइटिंग की जब हम बात करेंगे तो इसका जो है प्रॉपर फॉर्मेट होगा। अगर हम एक टॉपिक को लेते हैं कि नाउ-अ-डेज सिचुएशन वर्ल्ड वाइड फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जो है हम अगर ईरान और ये इन जो वार अभी हो रहे हैं उनकी बात करेंगे तो हम टू द पॉइंट आएंगे along with एग्जांपल्स, विद सपोर्ट्स, विद प्रूफ्स, विद कंक्लूजन। इसी तरह इनफॉर्मल में ये है कि आप अभी जो हम बात कर रहे हैं तो ये सारी इनफॉर्मल है, यानी कि आप क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको जवाब देता हूँ, कोई इसका जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है खास। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये अब्दुल रहमान है कि कौन है, घर का सामान लेने जा रहा है, तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अभी 5 मिनट है तो 5 मिनट में ये मीटिंग एंड होगी। Yes, anyone want to participate? Asim, are you there? यस सर। सर Yes. सर नहीं है ऐसा कोई। कुछ तो कहे स्टूडेंट से। सर उमामा अजीज, ये एकेडमिक राइटिंग में, हाँ सर, थर्ड पर्सन यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के बारे में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम रिसर्च की बात करें तो वहां पे तो हम आई को भी, फर्स्ट पर्सन को भी यूज नहीं कर सकते कि मैंने ये काम किया है। वहां पे हम कहते हैं कि रिसर्चर। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके, लेकिन ये है कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन ये जब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं वहां पे जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। एकेडमिक में तो चूंकि वो एप्लीकेशन है तो वहां पे आप इट इज स्टेटेड लाइक इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। उमामा अजीज, यस, अनम्यूट योर माइक। Yes, sir. अच्छा, क्या समझ आया? यस उमामा। Say something about academic writing. You haven't anything to say? Sorry, sir. नहीं। अच्छा ठीक है। सर एट द लास्ट, what which terminology we can use in academic writing? अच्छा, किस तरह की टर्मिनोलॉजी? क्लियर करें अपने जैसे कि क्वेश्चन। हमारे पास सर हमारे पास डिफरेंट, जैसे हमारे पास जॉर्गन्स लफ्ज डिफरेंस हम यूज कर सकते हैं, मतलब करते हैं इसमें, तो हम ये एकेडमिक राइटिंग में यूज कर सकते हैं सर। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि आप टर्म्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं। यस यस सर। अच्छा, इसकी जो है टर्म्स यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग की अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जिस तरह मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको हम फॉलो करेंगे तो इसमें हम खास किस्म की वोकेबलरी को भी देखेंगे, यानी कि ऐसे टर्म्स यूज करेंगे जो कि हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड हो। जिस तरह मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो वो जिस तरीके से मेडिकल वोकेबलरी यूज करते हैं वो नॉर्मल बंदा उसको नहीं समझ सकता, लेकिन जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं वो समझ सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये अभी बस 30-40 सेकेंड्स है फिर ये वाइंड अप होगा, तो आई थिंक इट्स एनफ। इसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे अगर जूम पे वो 1 आवर की नहीं होती क्लास तो फिर मीट को चेक करते हैं या टीम को चेक करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह
इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि क्या करना है, और व्हाट्सएप पे ग्रुप में रिव्यू भी दे दे कि किस तरह हुआ, एक्सपीरियंस किस तरह रहा आप लोगों का। थैंक यू।